Good evening, dear students. Now, after going through some basic properties of capacitor, now we are going ahead with energy stored in a parallel plate capacitor. Okay, when we are attaching a capacitor to a supply, power supply, to a battery, to a electrical energy source, okay, how the parallel plate capacitor stores energy and in which form it stores the energy. Okay, now we will be knowing that particular thing. Okay, so to start with, we are generating the situation related to capacitor. This is our capacitor. Okay, parallel plate capacitor. Fine. This particular plate connected to battery. Okay, other terminal of the battery is grounded to complete the circuit. Okay, and this other plate is connected to ground. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, उसको ग्राउंड करना है. फाइन, दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, ये बैटरी क्या करेगा, इसको चार्जेस सप्लाई करेगा प्लस क्यू. फाइन, ओके, लेट इसने प्लस क्यू चार्जेस यहाँ पे सप्लाई कर दिया. डन. इंड्यूस चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना चार्ज यहाँ पे है, जितना चार्ज ये यहाँ पे चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू इक्वल एंड ऑपोजिट. पॉजिटिव यहाँ पे इंड्यूस होगा, आफ्टर दैट दैट पॉजिटिव विल बी गोइंग टू ग्राउंड. ओके, नाउ you know basically what is happening, the very first question is how and why. Okay, a capacitor stores the energy. Whenever any object is storing the energy, इसका मतलब उसके ऊपर किसी ने बाहर से वर्कआउट किया है ना. वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ बॉडी स्टोर्स एनर्जी इन इट. ठीक, आप अभी अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर लो, यू विल बी नोइंग. जहां भी वो स्लैप लगेगा, वो थप्पड़ लगेगा, वहां से टेम्परेचर बढ़ेगा, साउंड आएगा, है ना. तो वाइल स्लैपिंग सेल्फ, आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो. ओके, एंड दैट वर्क परफॉर्म्ड ऑन योर फेस और वेयर एवर यू आर स्लैपिंग, वहां पे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना. वहाँ पे जो स्किन है थोड़ा बहुत कंप्रेस हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. फाइन, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है स्लैप की आवाज़ से. ओके, like that the work performed on our body stores energy in it. Now we have joined this particular capacitor to this battery. What this battery is doing, this battery is supplying charges. And when first charge is stored, very first charge is stored here, okay, that charge is stored by the battery without any work. Okay, now store second charge. First is stored over here, now second charge will be coming, तो first वाला second को repel करेगा. And in that situation the battery needs to perform a work to store the second charge against the repulsion of the first charge. मतलब नेक्स्ट चार्ज विल बी स्टोर्ड. नेक्स्ट चार्ज जब हम यहाँ पे स्टोर करेंगे थर्ड, तो यहाँ पे चार्जेस कितने स्टोर्ड हैं, टू. फाइन, टू चार्जेस के कारण यहाँ पे जो रिपल्शन होगा दैट विल बी मोर. ओके, मीन बैटरी नीड्स टू परफॉर्म मोर वर्क. तो जैसे जैसे ये प्लेट मोर एंड मोर चार्जेस स्टोर करता रहेगा, बैटरी battery requires to perform more and more work in order to store more and more charges. मतलब जितने भी एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स चार्ज के ये बैटरी इस कैपेसिटर को सप्लाई कर रही है, एडिशनल्स कहा मैंने. ओके, तो those all are supplied on this
to this particular plate against the repulsion by performing work against the repulsion due to stored charges. Okay, fine. So let the capacitor let the capacitor is charged from 0 to Q. ठीक है, इसके लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है. फाइन, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चार्ज है विच इज स्टोर्ड. तो हमने बीच में कहीं when the storing was taking place, let at certain point of time, okay, fine, suppose q charges are stored at some time, okay, on capacitor C. This capacitor which is given to us has a capacity C. Okay, so what will be happening when this charge Q is given to the capacitor? क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये ग्राउंड के ऊपर है, तो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल आएगा, कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगा. और इन अदर वर्ड्स आप इसको ये भी कह सकते हो, क्योंकि अगर यहां पोटेंशियल V बनता है, ये ग्राउंडेड है, तो V माइनस 0, वट एवर विल बी द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट सेम यू कैन से कि वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स होगा, है ना. तो जो स्टोर्ड चार्जेस होंगे वो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल बनाएंगे, या फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच में यू कैन से कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे. एज द स्टोर्ड चार्जेस विल इंक्रीज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज. Now, potential difference between the plates due to stored charges. V is equal to Q by C. Okay, C is the capacity of the capacitor and Q is the charge which are stored at certain point of time. So potential on the plate 1 or potential difference between the two plates correspondingly is V. अब potential difference के go back to definition. Potential difference क्या होता है? Potential difference is related to work done. Okay, fine. Now if we talk of potential of this particular plate, okay, potential क्या होता है? Work done in storing the charge, है ना. तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है. मीन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क रिलेटेड टर्म. ओके, तो पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स बोथ आर सेम टर्म्स. नाउ दिस टर्म, ओके, बाय डेफिनेशन अगर मैं इसको पोटेंशियल कहूं तो दिस इज वर्क डन इन स्टोरिंग अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज at some point in the field now. Okay, now let additional charge dq is stored on this plate. Already stored charge q था, इसके addition में dq charge store किया. Okay, additional charge dq is stored. एडिशनल क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि Q इज ऑलरेडी स्टोर्ड और उसके एडिशन में चार्ज dQ इज स्टोर्ड. नाउ क्या करना पड़ेगा? जो बैटरी बाहर लगा हुआ है उसको रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टोरिंग दिस एडिशनल चार्ज, ओके, dW is equal to work done in storing unit charge, that is V, multiplied by the charge stored, dQ charge stored. यूनिट के लिए वर्क डन इतना तो dQ के लिए कितना. प्लेसिंग वैल्यू ऑफ V, d
dw is equal to v is equal to, already we have calculated, that is q by c. So dw is equal to q by c into dq. Now this is work done, okay, when q charge already is stored on the plate and additional dq charge is stored. This is work done. dw is work done to store charge dq. Now what we have to do? We have charged this particular capacitor from 0 to q. So for total work done, क्या करेंगे? Integrating both sides between required limits. Integration of dw and integration of other side also, q by c. Here the integration factor is charge, so 0 to q. Fine. Now going ahead, we will have this integration will give total work done w. C is constant, 1 by c will be out, q. Okay, so when into q raised to 1 basically into dq, so when we will be integrating q 1 plus 1 over 1 plus 1, 0 to q. Okay, now solving this, we are getting work done is equal to, this 2 will be out, 1 by 2c and q square. When limits will be applied, it will be giving upper limit for q is q square minus 0. And this implies work done is equal to q square by 2c. Okay, now go to work energy theorem. As much work will be done, the same amount of energy will be stored. Okay, now अब बात आती है एनर्जी किस फॉर्म में इसने स्टोर किया. Now concentrate. As we are storing more and more charges on this particular plate, this is a static charge distribution which is being created. Okay, and as more and more charges will be stored on this particular plate, then due to repulsion, instability, okay, instability of this particular plate, matlab capacitor system will become unstable with the storage of more and more charges. Okay, so with the storage of more and more charges, more energy. Okay, why? Because with the storage, more work we are doing, mean more energy is stored. Okay, so here which the thing which we are getting, okay, due to storage of charge, okay, the energy which is stored by the system because of the work performed, okay, on the system to store charges, okay, that energy as is increasing the instability of this capacitor. Okay, और जो अनस्टेबल एनर्जी का फॉर्म होता है वो कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी, ओके, कैपेसिटर इज स्टोरिंग इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंप्लीट अगर बात करें तो द एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे आप क्या लिखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम से? एज मच वर्क डन, एज मच work done, the same amount of electrostatic potential energy, static potential energy will be stored by system, stored by capacitor, stored by capacitor. Okay, now अब आप इसके वो रिलेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो. पहले तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो W की जगह मैंने U लिखा एंड देन Q स्क्वायर बाय 2C. दिस इज वन फॉर्मेशन. ओके, नाउ as Q is equal to C into V. Okay, Q is equal to C into V यहाँ पे प्लेस करेंगे and we will be getting C square V square by
2C, 1C will be cancelled and we will be getting half CV square. Okay, in potential energy also can be written like this, half CV square. This is another formation. अभी यहाँ मैंने वैल्यू डाला था Q का, अब C का वैल्यू डाल दो. ओके, एज C इज इक्वल टू Q बाय V, यहाँ प्लेस करते हैं. फाइन, तो U is equal to Q, C is equal to Q by V, that is Q square by 2C था, C का वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, C is equal to Q by V, Q and Q gone and we are getting potential energy as half QV. तो इन सभी फॉर्मेशंस में फाइन आप लोग पोटेंशियल एनर्जी, दिस इन टर्म्स ऑफ C and V and this in terms of charge and capacitance. ओके, अगर आपको पूछा जाए इन विच फॉर्म द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, देन योर आंसर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज एनर्जी. You know, when capacitors are grouped together, okay, grouping of capacitor we have done in previous lecture. Fine, so we have studied two groups basically, okay, series and parallel, and mixed grouping can also be there. ठीक है, तो energy, how the energy will be, you know, studied when will be stored when the capacitors they are grouped together. चलो पहले बात करते हैं in series combination. Three capacitors C1, C2 and C3 are joined, okay, in potential difference V is applied across the series combination of C1, C2 and C3. Okay, now how you will be, you know, calculating the total energy stored. Fine, now total energy stored in the, you know, complete group will be decided by the total capacity. Okay, total capacity in series is 1 over Cs is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 by C3. Yes, ठीक है. Now total capacity ये हो गया. Now total capacity in the total energy in the combination U is equal to Q charge on each plate जो कि सेम होता है Q by 2C, total capacity is Cs. Okay, now इस कैपेसिटी का वैल्यू डाल दें. दिस इज Q स्क्वेयर बाय 2, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3. तो यहाँ पे यू आर गेटिंग U इज इक्वल टू Q स्क्वेयर बाय 2C1, Q स्क्वेयर बाय 2C2, Q स्क्वेयर बाय 2C3. Okay, fine. Now what is this? Q square by 2C1, energy stored in first capacitor. Q square by 2C, energy stored in second capacitor. Energy stored in third capacitor. Okay, when all the energies are added together, this is giving you energy stored in combination. मतलब energy stored in combination when the capacitors they are joined in series. जब सीरीज में ज्वाइन किया कैपेसिटर्स को, ओके, सीरीज में ज्वाइन किया इस तरह से, है ना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू जितना इसमें एनर्जी प्लस प्लस, ओके, टोटल एनर्जी is equal to energy stored in individual capacitor. Okay, now energy when the combination is parallel. Okay, now let वही three capacitors joined in parallel, C1, C2, C3 joined in parallel and potential difference V is applied across the like this. Okay, now total energy we have to calculate. How we will be doing? Now see here. Now because, you know, potential difference
across each capacitor is same. So it will be easy for us, to calculate energy if we are taking this relation half, okay, Cp capacity in parallel V square. Okay, now Cp, this capacity in parallel of this considered network, will be equal to, capacity in parallel is direct sum, C1, C2 and C3. Fine. Now placing all values, U is equal to half Cp, that is C1 plus C2 plus C3, then V square. Okay. Now U is equal to half C1 V square plus half C2 V square plus half C3 V square. Okay. Now potential difference across capacitor 1 V, 2 V, V. Now C1 is the capacity, potential difference across this is V, तो इसका एनर्जी कितना बना, हाफ C1 V square, हाफ C1 V square. Second one, half C2 V square, half C2 V square, half. Fine. So basically here also we are getting the same thing. This is total potential energy. This is potential energy stored in first capacitor, potential energy stored in second capacitor, plus potential energy stored in third capacitor. And here also the same thing we are getting. Okay, the total energy stored by the capacitor network is equal to sum of energy stored by individual capacitor. Hope you are able to understand, to go through the content, and if you are not understanding, go through the video again and again. Fine. Thank you. Have a nice day.